आई एम विजय शुक्ला, क्लास 12 में चैप्टर नंबर 22 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक। देखिएगा बेटा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और आपको जो मैं ये 2 वीडियोस दूंगा 20 मिनट्स के 2 वीडियोस होंगे, इससे आपके एग्जाम में 100% एग्जाम में मिलेगा। फर्स्ट 3D 3 पॉइंट्स x1 y1 z1 x2 y2 z2 3 पॉइंट्स गिवन है। आपने क्लास 11th में, इससे प्रीवियस क्लास 11th में रीड किया है। 3 पॉइंट्स शॉर्ट डिस्टेंस √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 होल स्क्वायर एंड सेंट्राइड x1 + x2 + x3/3 y1 + y3/3 नेक्स्ट AB, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB, then x2 - x1 y2 - y1 and z2 - z1. This is direction ratio of AB. This direction ratio A assuming and B and C. Then A is equal to x2 - x1 and B is equal to y2 - y1 and C is equal to z2 - z1. This point assuming A, B and C. First part, direction ratio of, this is unit of I, this is unit of J and this is unit of K. Then I is equal to, assuming direction cosine L is equal to cos alpha, right? X is equal to L is equal to cos alpha, and this unit vector means A vector upon mod A vector. This mod AB is equal to this. Suppose mod AB vector is equal to √x2 - x1 whole square plus y2 - y1 whole square plus z2 - z1 whole square, and AB vector is equal to mod √A square plus B square plus C square, value of A, value of B and value of C. Then L is equal to cos alpha is equal to, means unit vector A vector means x, A vector value x2 - x1 upon में mod this value means A upon √A square plus B square plus C square. Similarly, direction ratio of M, second value of B √A square plus B square plus C square. Cos alpha, this is cos beta and this is cos gamma. LMN, n is equal to ABC, C upon √A square plus B square plus C square. Next equation, first, second and third, squaring and adding. Then L square plus M square plus N square is equal to A square upon A square plus B square plus C square plus B square upon A square plus B square plus C square plus C square upon A square plus B square plus C square, right? Next LCM, A square plus B square plus C square, A square plus B square plus C square cancel out is equal to 1. Three-dimensional first identity is L square plus M square plus N square is equal to 1. Otherwise, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. Clear? Next, suppose sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to 2. Break cos square alpha 1 minus sin square alpha cos square beta 1 minus cos square 1 minus sin square beta and cos square gamma 1 minus sin square gamma, means sin square alpha this side, sin square beta this side, sin square gamma this side, 1 1 1 3 1 आगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपकी वैल्यू आएगी sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to 2. ओके, नेक्स्ट नोट करिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन जॉइनिंग हुज डायरेक्शन रेशियो गिवन। देन फर्स्ट direction ratio is equal to 2, -1, 2, right? This is value of L, this is value of M, this is value of N.
then L is equal to, we know that A upon under root A square plus B square plus C square. Very clear. And LM is equal to B upon under root A square plus B square plus C square. And N is equal to C upon under root A square plus B square plus C square. Previous questions में आपको मैंने क्लियर किया था, राइट. नेक्स्ट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L, A वैल्यू 2 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 प्लस -1 स्क्वायर 1 and 2 स्क्वायर 4 4 4 8 and 9. नेक्स्ट 2/3. ठीक. नेक्स्ट M इज इक्वल टू B -1 अपॉन 3 and N is equal to C 2 upon 3. Same value 3 3, right. Next value of L, value of M, value of N, and cos alpha is equal to this and cos beta is equal to this and cos gamma is equal to this. No problems, right. Find the direction cosine, the line joining the points this and this. ठीक है. Next let assume A vector is equal to, वेक्टर में assume कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा, अदरवाइज A में लेट कर लेना. ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं. A is equal to -2, 4, -5 and B is equal to 1, 2, 3. Next value of AB, direction ratio of AB, then AB is equal to x2 minus x1, 1 -2 minus plus हो जाएगा बेटा 3, then 2 -4 -2 and 3 -5 minus +5 and 3 5 8. This direction ratio 3 -2 8. And next mod AB, mod AB. सिमिलरली यहाँ पे हम लोग कर सकते थे, mod AB निकाल लेते हैं, इसको लेट करते हैं A और mod A का डिवाइड करते हैं. सपोज करो गिवन है A इज इक्वल टू 2 -1 2. नेक्स्ट mod A वैल्यू ऑफ 3 एंड सेपरेटली डिवाइड 2/3 -1/3 2/3. दिस इज आंसर, नो प्रॉब्लम. दिस इज राइट मेथड. एंड ऑल्सो नेक्स्ट अगेन AB वेक्टर इज इक्वल टू, mod AB वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर 9 4 2 स्क्वायर 4 and 8 स्क्वायर 64 and 64 and 4 68 68 and 9 77. Clear. Next find direction cosine. This value direction cosine of 3, first point upon root 77, second point -2 upon root 77 and third point 8 upon root 77. This is direction cosine. वैल्यू L, M, N and cos अल्फा cos बीटा cos गामा. ठीक है. नेक्स्ट फाइंड द एंगल. दिस हम लोग एंगल फाइंड करना बेटा. एंगल के अकॉर्डिंग A इज इक्वल टू, एज्यूम कर लेना बेटा. नेक्स्ट निकालना mod A. mod A इज इक्वल टू अंडर रूट मीन्स दिस कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 and 1 स्क्वायर 1. दिस वैल्यू ऑफ √3, राइट. दिस वैल्यू ऑफ √3 गिवन है. A वेक्टर इज इक्वल टू दिस and A vector mod √3. Coefficient of I 1 upon √3. Value of L, value of L means cos alpha and alpha is equal to cos inverse 1/√3. Clear. Similarly second elements, ये means ये L वैल्यू, ये M में पुट करेंगे बेटा तो M is equal to value of 1/√3. M is equal to cos beta and beta is equal to cos inverse 1/√3. Similarly -1 and N is equal to -1/√3. value of cos gamma, एंगल फाइंड करना है बेटा. गामा is equal to cos inverse -1/√3. क्लियर. नोट करिए इसको. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन 3L plus M plus 5N is equal to 0, 6MN minus 2NL plus 5LM is equal to 0. Next, solving this equation first and this equation second. Find the value of M. M is equal to minus 3L minus 5N. Okay, M is equal to minus 3L minus 5N. This is equation second, this is equation first, right? Put the value of M in equation second. Next, equation second, 6M, put the value of M minus 3L minus 5N and minus 2NL plus 5L, put the value of M minus 3L minus 5N is equal to 0, right? Multiplication 6N multiplication minus 18NL, 6 minus 30N square minus 2NL plus minus 15
L square and minus 25 L n is equal to 0. Negative sign common this side. Okay, all elements are positive. Then write systematically 30 n square first. Negative sign common, all elements positive. 18 2 20 and 22 25, sorry, means 45 nl, and minus 15 L square is equal to 0. 15 common, then 2n square plus 3 nl minus L square. This is value of L square is equal to 0 and 15 is equal to 0. Next factorization, 2n square into L square, then factor 2n square plus 3nl break 2nl plus nl minus L square is equal to 0. Clear? Next, common 2 common, then n plus L common. Actually negative sign common, this sign is positive. नेगेटिव साइन मैंने आपसे कहा था बेटा नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तभी तो ये पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होगा. प्लस एंड एल कॉमन, देन एन प्लस एल इज इक्वल टू 0. देन एन प्लस एल कॉमन एंड 2n प्लस एल इज इक्वल टू 0. क्लियर? नेक्स्ट n प्लस एल कॉमन, तो n प्लस एल इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू माइनस एल. सेकेंड कंडीशन 2n plus L is equal to 0, then 2n is equal to minus L and n is equal to minus L by 2. Clear students? Next, n is equal to minus L, put the value of this equation. Next m is equal to minus 3L minus 5 into n value minus L. Next, minus 3L plus 5L is equal to 2L, right? Direction ratio L M N, right? L value L, M value 2L and n value minus L. This is coordinate 1, 2, minus 1. This is first vector, A vector is equal to I plus 2j minus k. Clear? Okay. Next, 2n plus n is equal to minus L by 2. Put the value of n again this equation. Then m is equal to minus 3L minus 5 n value minus L by 2. प्लस हो जाएगा बेटा minus 3L plus 5L by 2 and 2 LCM minus 6L plus 5L and next minus L by 2. Direction ratio find. Direction ratio L and n value minus L by 2. Direction ratio is coefficient 1, ratio minus 1 by 2, ratio minus 1 by 2. Negative sign divided and 2 LCM, that is negative sign divided, then positive, that's negative, minus 2 1 ratio 1, coordinate of minus 2 1 1, that is B vector. B vector is equal to minus 2i plus j plus k, right? And A vector and B vector, then cos theta is equal to A vector dot B vector upon mod A vector and mod B vector. स्टूडेंट्स एक कॉमन सी बात है, जब रेशियो निकाले, मैंने आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा 1:2, 1:3, 1:4. हमें रेशियो में गिवन है तो हम लोग एलसीएम लिया करते थे बेटा 12, 2 6 जा 6, 3 4 जा 4 एंड 4 3 जा 3. दिस रेशियो आंसर, ये आपका आंसर हुआ करता था. 12 आपका एलिमिनेट हो जाएगा, आपकी जो वैल्यू होगी 6:4:3, सेम एज इट इज़. यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन था, मैंने नेगेटिव से डिवाइड कर दिया, दिस इज नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और 12 से हम ले लेंगे -2, तो ये आपका ये बनेगा फॉर्मेट. क्योंकि आप लोग जो बनाओगे इसको तो सिर्फ नॉमिनेटर में ही बनाएंगे वेक्टर, राइट? ओके. या अदरवाइज आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पे आप IJK को मान के भी वेक्टर सॉल्व कर सकते हैं बी वेक्टर से. नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इफ Q be foot of the perpendicular from P, Q is foot of the point P 2, 3, 4. This point 2, 3, 4 to the line joining the point A points 1, 2, 4 and B points 3, 4, 5. Okay. Next 2, 4, 3. क्लियर कर लेना बेटा, ये 2, 4, 3, 2, 4, 3, then 2, 4, 3, right? Next, direction ratio of AB. Direction ratio of AB.
then 3 minus 1 2, 4 minus 2 2, and 5 minus 4 this 1, right? Next, let point Q, find the value of point Q. This ratio M1 ratio means M ratio 1. This line AB cut this point Q, M ratio 1. Clear? Now using intersection formula, according coordinate of x-axis means x, y, z, m1 x2, this value x1 y1 z1, x2 y2 z2, m1 x2 plus m2 value of this value of m1 and m2 value 1, m2 x1 value 1 upon m1 plus m2, right? Same m1 y2 value 4, m1 y2 means m1 value of m, right? m1 y2 plus m2 y1 value 2 upon m1 plus m2, and m1 z2 plus m2 z1, m2 value 1, sorry, upon m1 plus m2, right? m1 value m, right? Next, coordinate of Q into intersection formula, then 3m plus 1 upon m plus 1, and 4m plus 2 upon m plus 1, and 5m plus 4 upon m plus 1. Clear? Next, this coordinate and direction ratio of PQ. Direction ratio of PQ, this point minus this point means 3m plus 1 upon m plus 1 minus 2, 4m plus 2 upon m plus 1 minus this point 4, and 5m plus 4 upon m plus 1 minus 3, right? Next, LCM and simplification. Then LCM minus 2m minus 2, 3m minus 2m the value of m, and minus 2 plus 1, simplify, okay? m plus 1, 3m plus 1 minus 2m minus 2, right? Value m minus 1 upon m plus 1. Next, LCM m plus 1, then 4m plus 2 minus 4m plus minus 4,